हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर। दोस्तों, हमारे साथ हैं काव्या जी का जो है वो ईयर में प्रॉब्लम थी इनको। एंड समहाउ इन्होंने क्या है, ईयर की कहीं सर्जरी वगैरह भी कराई थी, बट दैट इज़ नॉट सक्सेसफुल। क्यों नहीं वो क्या हुआ, पहले इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं की जर्नी की जो है कैसे ये अपने पास आए और अभी सर्जरी कराने के बाद कैसा एक्सपीरियंस है। काव्या जी, आप बताओगे ईयर की जर्नी अपनी पूरी। या श्योर। एक्चुअली हमने ये सिगरा में ये बनारस में सिगरा में दिखाया था फर्स्ट टाइम, क्योंकि मेरे बचपन से बहुत ज़्यादा पेन हो रहे थे। तो उस टाइम में हमने बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया। इस टाइम में फ्लूइड डिस्चार्ज होते थे, तो बिहार में भी दिखाया था। तो उस टाइम तो फ्लूइड डिस्चार्ज बंद हो गए। फिर उसके बाद दर्द वैसी के वैसी रह गए। फिर हमने अपने जहाँ नेटिव प्लेस है वहाँ पे हिंडाल्को में दिखाया, तो कोई सूटेबल नहीं हुआ। तो उसके बाद हमने बीचू में दिखाया था। तो उस टाइम डॉक्टर ने बोला कि एवरीथिंग इज़ फाइन। सो ही हैड गिवन मेडिसिन टू मी, बट अनफॉर्चुनेटली आफ्टर अ मंथ इट इज़ ऑल ear drum is totally damaged. So he told that it is going to be get operated. अच्छा। So my parents were like, we came here for the treatment, not for the operation. So what you have done with this thing? Okay. So he was like, there is no other option. We have to do the surgery. Mm-hmm. Then going to this right ear surgery, the same condition was there in left ear also. It was started. So I had informed doctor that this is the condition. So he was like, oh, just ignore it. It's something you vaham. Okay. So I told him, no, doctor, it's happening again. I had gone through this one. So he was like, no, nothing happened. So I also just ignored. After in 2022, it was something August. So again, both of the ears discharge fluid started. Okay. So that time I had taken admission in Bechu, so I had a health diary. So I directly went there in student health center. I told him that actually I had got operated in Sigra with some ENT surgeon. So again it started. So he recommended me Dr. Professor Rajesh Kumar. He is the best surgeon known as a ENT surgeon. So I went there. He told me that your left eardrum also got damaged. Okay. It must be got operated, otherwise you may be going to be deaf for a lifetime. So this was happened. Again, he just done many more How you procedure. know about this Jaipur Durbin Hospital? I will let you know. Then going through those, then also suddenly it was something. Having 3 years continuous medicine running Continuous over there. medication. Yeah. Okay. So finally, here in August 2024, for a month I had cold. So I just consulted with my brother. I have these problems from 4 years suffering. So he contacted you from Professor, no, that is Paris Sankla, Yes, sir. yes, Yeah, Dr. he Sankla. contacted you. So he told, and from many other people here, I came over here. I got some optimist view that yeah, he is a nice doctor. Yeah, really, it was. So here I came over here. So I saw my condition. It was the worst one. First time I saw that one, fungal, something like that. So it got treated. He also helped me a lot. Yes. Yeah. So Then after the surgery, now the 4 months, Ah. how's your feeling now? Good Good. one. And what is other important message to person who have the same problem like off and on in ear? क्या मैसेज है जो लोगों को प्रॉब्लम है उनको आपकी तरफ से? They have to go through this all the procedure well. They actually go to the roots. What is the main cause of it? Why it is happening again?
so they have to consult the best one. And here this is the best hospital I got over here, because I have gone through this, I have an experience. So they also have to come over here to see Yes. you. Yes. Satisfied with the whole treatment? Yeah. And how was your experience with the staff members of the hospital and doctors? They are very cooperative. Yeah, doctors are the most humble one. हाँ दोस्तों, हमारे साथ हैं हमारे रिनोवांड ऑटोलॉजिस्ट डॉक्टर राजवीर। डॉक्टर राजवीर, आप बताओगे कि क्यों ऐसा एक बार कई बार ऑपरेशन होने के बाद में आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसी प्रॉब्लम होती है पेशेंट के साथ? बहुत बार कई बार पेशेंट जब कोई फ्रेशर डॉक्टर्स के पास में कई बार जाते हैं तो कई बार पूरी अच्छे तरह से कोई इक्विपमेंट भी नहीं होते हैं, तो कई बार वो ऑपरेट करते हैं तो कई बार रेजिडुअल प्रॉब्लम रह जाती है। कई बार स्पेशली जब कोलेस्ट्रेटोमा जैसी सर्जरी रहती है तो वो कई बार रिकरेंस कर जाता है, रेजिडुअल भी रहता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम क्या है कि कभी भी पेशेंट के दोबारा हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में पेशेंट के लिए तो यही मैसेज होता है, तो एक बार अच्छे से देख लें और कोई भी एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास में जा कर के हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अच्छे से उसको पहले एवेल्युएशन, जो भी सीटी स्कैन और प्रोटोन ऑडोमेट्री टेस्ट वगैरह, जो सारा एग्जामिनेशन अंडर माइक्रोस्कोप करके उसको एश्योर कर लेना चाहिए कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्या हमें कोई ये मास्टोइड की सर्जरी करने की नीड है या फिर ओनली ग्राफ्ट लगाने की नीड है। तो उसकी सिचुएशन के अनुसार हमें काम करना चाहिए। और जब साधन सुविधा सब अच्छी होती हैं, पेशेंट जब अच्छे होते हैं और तो फिर अच्छा ही रिजल्ट आता है। One more thing I want to say there. Yes. Before coming here, I wanted to know what is going inside my ears. So I asked Professor to whom I got surgery. Okay. So I asked him, see again, it seems to be fluid come out. He was like, it's fungal infection. After a week, I am going to give you medicine. After a week, it will be all right. So it was literally a disappointment for you. Yes, definitely. So friends, जो आपने देखा कि इनकी एक जर्नी रही कि ईयर के अंदर इनको प्रॉब्लम थी एंड सर्जरी भी कराई, सक्सेसफुल नहीं हुई, फिर वापस सर्जरी कराई। सो कहीं ना कहीं हमारी जो अवेयरनेस है उसके लिए हमें बहुत एक ज़रूरी इम्पोर्टेंट है, जैसे डॉक्टर राजवीर ने भी बताया कि आपको जो आपकी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग हमें सर्जन का एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। दोस्तों, हो सकता है अगर हमने अच्छी टेक्निक से, अच्छे सर्जन की स्किल से सर्जरी कराई तो एक बार में भी सक्सेसफुल होती है। अदरवाइज़ चाहे 4 बार कराओ, चाहे 3 बार कराओ, बहुत बार इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ क्योंकि ईयर में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी और अंदर कहीं ना कहीं कोई ईयर के अंदर जो प्रॉब्लम रह गई जिससे जो ग्राफ्ट वगैरह लगाया वो भी रिजेक्ट हो गया, क्योंकि आजकल क्या है बहुत सारे एडवांसमेंट हो गए। एंड दूसरी बात यह है कि अगर अच्छे सही टाइम पर अगर हम सर्जरी करा लेते हैं तो ईयर को ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं होती। आजकल एंडोस्कोपी की दूरबीन से भी सर्जरी हो जाती है, लेकिन अगर किसी की सर्जरी पहले दोस्तों हो जाती है तो दूरबीन से फिर उसको करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है दूसरे सर्जन के लिए। इसलिए आपको जो है अपना सर्जन का चुनाव करने पे पहले बहुत बार अच्छे से उसको देखना चाहिए, पहचानना चाहिए और दूसरे डॉक्टर से भी राय करके अपनी सर्जरी कराना चाहिए। एंड थैंक यू काव्या, नाउ यू आर फाइन एंड आई विश फॉर द गुड फॉर द योर नेक्स्ट हेल्थ। ओके, थैंक यू।